So definitely we believe having a good relation with all Middle Eastern countries, it's a good thing, and we want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. I think. Mr. Ilyas, what do you have to say about this whole issue? See, the first rule of Islam and Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that no innocent man, woman and child should be killed. Israel has killed more than 3 lakh innocent Palestinians in the last 70 years. This is also oppression and barbarity, and if in retaliation Hamas is attacking and killing women and children, then it is also barbarity and deserves to be punished. The second point is that the Westerners who bought the Jews of Israel and established the Balfour Declaration in Palestine are the same Westerners who barbarically ruled India for 200 years and destroyed it, and again they are destroying Palestine through Israel. The third and important point is that every time Israel breaks the rules and agreements of international conventions, United Nations, and now it has stopped the food and water supply of more than 20 lakh Palestinians and plans to kill them in mass genocide. And for that every good nation is condemning Israel and its tyrant supporters. The fourth and last point is, from Mahatma Gandhi to Vajpayee and from Vajpayee to Narendra Modi, the stand of India is clear in the United Nations that Israel should accept Palestine as an independent state. The fighting should stop and the two-state theory should be implemented. Palestine will rule independently from Jerusalem to the surrounding areas, and Israel will rule from Tel Aviv. A tyrant like Netanyahu is not understanding this whole issue. Mr. Ilyas, I want to know that you are saying that Jews are committing oppression against Palestine, but the incident that we have seen 3 days ago, is it the right way to counter an opposition? The way women and children were killed, is this the right way? Every next day Israel kills innocent women and children and no news channels broadcast it. There's no debate about it and you never invite me. 3 lakh innocent women and children have been killed by Israel. It is also oppression and terrorism. The innocent women and children killed by Hamas, it is also terrorism. Strict action should be taken against both of them and they should be punished till they regain their senses and all the lives of innocents are saved. BJP MPs were speaking against terrorism. I appreciate it. Sadhvi Pragya terrorist. These are the people who released terrorist Colonel Purohit and made him a member of parliament. He is the one who killed innocent Indians in a masjid with a bomb blast, and Shahid Hemant Karkar have exposed him. इलियास साहब क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर आप? देखिए, सबसे पहले इस्लाम का हुक्म अल्लाह रसूलुल्लाह का है कि किसी भी मासूम मर्द, औरत और बच्चे को ना मारा जाए। तो इजराइल ने जो 3 लाख से ज्यादा को मार दिया पिछले 70 सालों में फलस्तीनियों को, ये भी जो जुल्म और बर्बरियत है। और हमास पलटा कर अगर औरतों बच्चों को मार रहा है तो वो भी बर्बरियत है। दोनों को उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू अंग्रेजों ने इजराइल को, यहूदियों को लाकर फलस्तीन में बसाया। वही अंग्रेज जो 200 साल तक हम पर बर्बरियत से, बर्बरता से हुकूमत करके भारत को बर्बाद करे, वही अब फलस्तीनियों को बर्बाद कर रहे हैं इजराइल के थ्रू। तीसरी अहम बात, हर वक्त इजराइल इंटरनेशनल कन्वेंशंस, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स को तोड़ता है और हर वक्त ओस्लो एग्रीमेंट को तोड़ता है। 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों का खाना पानी बंद कर उनको मारने की प्लानिंग जिनोसाइड पर उतारू है। और इसके लिए दुनिया का हर अच्छा देश निंदा कर रहा है इजराइल की, और जो जालिम इजराइल की मदद कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। चौथी और आखिरी बात, महात्मा गांधी से लेकर वाजपेयी जी तक और वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत का स्टैंड क्लियर है यूनाइटेड नेशंस में कि इजराइल ने फलस्तीन को मानना चाहिए, लड़ाई बंद करनी चाहिए, 2 स्टेट थ्योरी चलनी चाहिए। फलस्तीन अपनी हुकूमत करेगा जेरूसलम से लेकर अतराफ के इलाकों पर, और इजराइल तल अवीव से अपनी हुकूमत करेगा। ये चीज नेतन्याहू जैसी दरिंदगी वाले इंसान को समझ नहीं आ रही, और वो पूरी दुनिया को तीसरी। इलियास साहब, मैं जानना चाहता हूं, एक आप ठीक है, आप एक आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि वहां पर यहूदियों ने जुल्म ढाया है फिलिस्तीन पर, फिलिस्तीनियों पर, लेकिन जो घटना 3 दिन पहले हुई, क्या वही तरीका है? क्या वही तरीका है विरोध दर्ज कराने का? क्या उसी तरीके से निर्मम हत्याएं होनी चाहिए थे जिस तरीके से हत्याएं की गई, जिस बर्बर तरीके से सिविलियन पर अटैक किया गया, जिस तरीके से महिलाओं बच्चों को नहीं बख्शा गया? क्या यही तरीका है? देखिए, इजराइल हर दूसरे दिन मासूम बच्चों को, औरतों को मारता रहता है। कोई न्यूज नहीं बनती, कोई डिबेट नहीं होता, आप मुझे कभी भी नहीं बुलाते।
हमास मारा है, आपने बुलाया, बात करने का मौका मिला। इजराइल जो 3 लाख को मारा है, मासूम औरतों और बच्चों को, वो भी जुल्म, आतंकवाद है। हमास ने जो मासूम औरतों बच्चों को मारा है वो भी आतंकवाद है। दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और दोनों को अखंड ठिकाने आए तक, मासूमों की हिफाजत होने तक सजा दी जाए। बीजेपी के सांसद आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी, कर्नल रोहित आतंकवादी को आजाद कराने में यही है, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने में यही है, जो मासूम हिंदुस्तानियों को मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट से मारे, जिसको हिम्मत करके नहीं बीजेपी ने इलियास सफरुद्दीन साहब, इलियास साहब مرحبا إلياس السيد، ماذا لديك لتقول حول هذه القضية بأكملها؟ تعتبر القاعدة الأولى في الإسلام ورسول الله أنه لا يجب قتل أي رجل أو امرأة أو طفل بريء. قد قتلت إسرائيل أكثر من 300 ألف فلسطيني بريئا خلال 70 عاما الماضية، وهذا أيضا ظلم ووحشية. وإذا هاجمت حماس بالرد على ذلك وقتلت نساء وأطفالا فإن ذلك أيضا وحشية ويستحق العقاب. النقطة الثانية هي أن الغربيين الذين دعموا اليهود في إسرائيل وأقاموا إعلان بلفور في فلسطين هم نفس الغربيين الذين حكموا الهند بوحشية لمدة 200 عام ودمروها، ويقومون مرة أخرى بتدمير فلسطين من خلال إسرائيل. النقطة الثالثة والمهمة هي أن إسرائيل تخرق كل مرة قوانين واتفاقيات المعاهدات الدولية والأمم المتحدة، وأنها قد أوقفت إمدادات الغذاء والمياه لأكثر من 2 مليون فلسطيني وتخطط لقتلهم في إبادة جماعية. وبالنسبة لذلك تدين كل أمة حسنة إسرائيل وداعميها الطاغوت. النقطة الرابعة والأخيرة هي من مهاتما غاندي إلى فاجباي ومن فاجباي إلى ناريندرا مودي أن موقف الهند واضح في الأمم المتحدة بأن يجب على إسرائيل قبول فلسطين كدولة مستقلة. يجب أن تتوقف المعركة ويجب تنفيذ نظرية الدولتين، حيث ستحكم فلسطين بشكل مستقل من القدس إلى المناطق المحيطة، وستحكم إسرائيل من تل أبيب. لا يفهم طاغوت مثل نتنياهو هذه القضية بشكل كامل. السيد إلياس، أرغب في معرفة رأيك في أنك تقول أن اليهود يرتكبون ظلما ضد فلسطين، لكن الحادثة التي شاهدناها قبل 3 أيام هل هي الطريقة الصحيحة لمواجهة المعارضة، الطريقة التي تم فيها قتل النساء والأطفال؟ كل يوم يقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي نساء وأطفال بريئين، ولا تبث أي قنوات أخبار ذلك، ولا هناك مناقشة حوله، وأنتم لم تدعوني أبدا. قد قتلت إسرائيل 300 ألف امرأة وطفل بريء، وهذا أيضا ظلم وإرهاب. إن قتل حماس للنساء والأطفال الأبرياء أيضا إرهاب. يجب أن يتخذ إجراءات صارمة ضد كلا الطرفين، ويجب معاقبتهما حتى يعودوا إلى أوطانهم ويتم حفظ حياة جميع الأبرياء. كان نواب حزب بهاراتيا جانات جميعهم يتحدثون ضد الإرهاب، وأعجبني ذلك كثيرا. يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد كلا الطرفين ويجب معاقبتهما. ساد في براجيا إرهابي. هؤلاء هم الأشخاص الذين أطلقوا سراح العقيد الإرهابي بروهيت وجعلوه عضوا في البرلمان، وهو الذي قتل الهنود الأبرياء في مسجد بانفجار قنبلة. وقد فضحه الشهيد هناند كاركاري.